Okay, so let's continue our discussion about boundary conditions. Any question so far? Ji? Any question? No, sir. Okay. Okay, so let's move on to the third boundary condition. So let me draw the figure again. So we have boundary between medium 1 and medium 2. And now what we are going to do is we are going to find out the relationship between tangent component of electric field. So we have this vector, which I called as E T, where T is for tangent. So this is the tangent component of the electric field. And because this is, we are right in the medium 1 side, so I will call it ET1. And similarly, there will be tangent component on the other side of the boundary, and I can call it ET2. So now our goal is to find out what is going to be the relationship between these two field components, which are on two different mediums, medium 1 and medium 2. So now, again, making use of Maxwell equation. So the Maxwell equation that we are going to use is the third Maxwell equation, and it was basically Faraday's law, and that was the closed line integral of electric field. Closed line integral of electric field is equal to minus rate of change of magnetic flux passing through the surface, which is formed by this closed path. Which is formed by this closed path. So whenever you have a closed path, so closed path always can make some kind of a surface. So that is the surface. And we also included the hypothetical magnetic current density. So if there is a magnetic current density passing through the surface, it can also produce this closed line. And you all know that the left-hand side is basically EMF. EMF induced because of either changing magnetic flux or because of the magnetic current that is passing through the surface. So this is the equation that is going to, as you can see, our goal is to relate electric field, and this is the electric field right there in the Maxwell equation. But in order to apply this, we need to again select a closed path. Closed path. So where is the closed path? So we can consider that the closed path is this one. So let me draw the closed path. So the blue line that I'm using, this is representing a closed path. So what is this? This is a closed path. So this is this dimension is again represented as H, and this one, the horizontal one, we can call it delta L. Delta L. Again, you can use any symbol you like. I am using the symbols that has been used in the book, but again, it's up to you. You can call them X or Y. It's up to you. Okay. So this is a closed path. So whenever you select a closed path, you have to mention from where you are starting. So let's assume that this is our starting point. So we start moving in this direction. So this is, and then we move in this direction, and then we move in this direction, and finally we come back to this. This is telling us the direction in which this closed path is traversed. Okay. Now, because our
focus is the boundary, which is right there. So I want to make sure that this path, this closed path, gets projected out the boundary. And that can happen if I again make this assumption that this side, this one, this is equal to 0, so that this side also becomes 0. So I will say in the limit, and h approaches to 0. So what will happen? Now we will only have, let me draw it again over here. So this is the boundary. And now because of h equal to 0, we only have this line. So we only have delta L. So what will be the answer to this closed integral? So we have ET1. So I will say ET1. And because this path, this one, this path, and this ET1, they are in the same direction. They are in the same direction. So it means in the dot product, you have cos of 0. So it means you get ET1 delta L. And then if you look at it, the direction of ET2, ET2 is also in this direction from left to right, but the path direction for ET2 is in this direction. So you can see that this is making an angle of 180 degree. So when you take the dot product, so you end up with cos of 180 degree, which is equal to -1. So for this, we get minus ET2 delta equal. Now what we will get on the right hand side. What is on the right hand side? Right hand side is telling us how much is the magnetic flux passing through the surface, So where is that surface? That surface is this one. As I mentioned before, any closed path will enclose some surface. So the closed path that I consider, it is enclosing this particular area, which you can call as S. But when I apply this limit, h approaches to 0, then you can see that this becomes like this. So how much is the surface area? How much is the surface area? It is equal to 0. There is no surface. There is only line. So if there is no surface, it means magnetic flux passing through the surface will also be 0, because flux depends on area. If there is no area, no flux passes. Similarly, this S is also 0. So what happens? On the right hand side, we have equal to 0. So this will cancel out. So finally, what you get? You get ET1 minus ET2 is equal to 0. Now, what is the meaning of this equation? The important point is, again, we need to write this equation in a vector form. In medium 1, the electric field can be generally represented by vector E1. In medium 2, electric field will be represented by E2. Now this is a vector. It can be pointing in any direction, but what I have done is I have only considered this component which is parallel to this boundary or tangent to the boundary. That is why I was calling it ET2. So ET2 is nothing but the tangent component of this total E2. And ET1 is nothing but the tangent component of E1. So how can I write this in a vector form? So we already know that the unit normal vector is in this direction. So what if I take unit normal vector and I take the cross product of this with E1? That will give me ET1. And similarly, if I take the dot
not dot cross product of unit normal vector with E2, that is going to give me the tangent component. So this ET1 can be written in this form and ET2 can be written in this form, and that must be equal to 0. So this is going to be our third boundary condition. But what is the meaning of this boundary condition? This boundary condition is telling us that tangent component of electric field is always continuous. Tangent component of electric field is always continuous, which means whatever tangent component of electric field is on one side of the boundary, the same tangent component will be on the other side of the boundary, because their difference is 0 means that they both are equal. So tangent components are always equal, or tangent components are continuous. This is different ways of interpreting this third boundary condition. Now coming to the fourth one, the fourth boundary condition. Now we are going to find out the relationship between tangent component of magnetic field in medium 1, HT1, and tangent component of magnetic field in medium 2, that is represented by HT2. In order to find the relationship between HT1 and H2, we are again making use of the fourth Maxwell equation. The fourth Maxwell equation is basically the closed line integral of magnetic field is equal to rate of change of electric flux passing through the surface that is formed by this closed path plus electric current passing through the surface which is formed by this closed path. This is basically, if you remember, Ampere's law, but this term was added by Maxwell. So this is the equation that is going to help us to relate HT1 and H2. So in order to apply this, we need a closed path. We need a closed path. So I can do the same thing as I've done for the third boundary condition. I can assume that there is a closed path. This is representing closed path L. Again, it's a vector length, so we represent it by its direction as well. And the path dimensions are, this is H, and this is delta L. Again, our focus will be the boundary. So we will transform this figure in such a way that this closed path, it gets projected on the boundary. So again, that can happen if I assume that for this closed path, H is almost approaching to 0. So it means these vertical dimensions, they will be 0, and we will only end up with this one and this one. So HT1 and this path is in the same direction. So what you will get HT1 delta dot product. And because they are in the same direction, so you get cos of 0, which is 1. But for this, this is HT2, but this is in the opposite direction. So you have cos of 180 degrees, so you get minus sign. So this integral in the limit
it gets reduced to this. And what is going to happen to the two terms on the right hand side? The first term is the mathematical representation of rate of change of electric flux passing through the surface that is formed by this closed path. So where is that surface? In its original form, this is the surface. This is basically S. But because we are taking H approaches to 0, so what happens when H becomes 0, this area becomes equal to 0. So when area is 0, flux becomes equal to 0, and of course rate of change also becomes equal to 0. So this term will be 0. What about this term? If you remember, this J is the current density, and if you remember in my first figure, I represented that on this boundary there will be some current density, there will be some current, which I represented as Js. So how much is the current on this? That must be equal to Js multiplied with delta L, because we are only considering this path. So you have this path. So how much current will be within this? It must be equal to Js multiplied with delta. So this delta cancel out. So we end up with HT1. Sorry, this was HT2 minus HT2 equal to Js. And again, writing it in a vector form, HT1 is nothing but the tangent component of H1. So how I can calculate the tangent component of this vector? By taking its cross product with this unit vector. So what you will say n cross H1 minus n cross H2 equal to Js. And this is going to be our fourth boundary condition. And what is the meaning of this equation? What this equation is telling us? This equation is telling us that the tangent component of magnetic field is discontinuous at the boundary, because n cross H1 minus n cross H2 is equal to Js. So now, through this process, what I have done is, using 4 Maxwell equations, we have derived 4 boundary conditions. So now I can write them collectively. So I will call them general boundary conditions. Why I'm calling them general boundary conditions? Because of the reason that in this the whole derivation process, I haven't specified what is the nature of medium 2 and what is the nature of medium 1. So these boundary conditions are valid for any type of the boundary, any type of boundary between any type of medium. So that is why I'm calling them general boundary conditions. So what are 4 general boundary conditions that we have derived, and we will use them many times during this course? So the first boundary condition that we derived was related to electric flux density. So according to Maxwell equation, at the boundary between two media, the magnetic flux, electric flux density will always be like this: n dot d2 minus n dot d1 is equal to rho s. This is the first boundary condition. Second one is n dot b2 minus n dot b1 is equal to 0.
third one was n cross E1 minus n cross E2 is equal to 0. And fourth one is n cross H1 minus n cross H2 is equal to Js. So these are four boundary conditions that will be useful for us. Now, what are these? Are general boundary conditions. So let's generalize. Let's specify this condition. So it means now I'm going to talk about special cases in which I will talk about. I will specify what is medium 2 and what is medium number 1, and then we will see what will happen to these general boundary conditions. Okay. So the first case is case number 1 or situation number 1 is boundary or I will call it fields at a boundary between two lossless dielectric materials. So now what situation I'm considering? I'm assuming that the boundary that we are looking at is the boundary is between two lossless dielectric materials. It means uh, let's assume that this medium 1 and medium 2, they are dielectric materials, as well as I'm assuming that they are lossless. Now, in my previous lectures, I mentioned about this behavior, that is medium losses का ताल्लुक किस चीज के साथ होगा जी? Can anyone answer this question? सर कंडक्टिविटी के साथ हो सर, परमिटिविटी के साथ. Yes. So we mentioned this point that from electromagnetic fields point of view, losses are related to the conductivity of the media. Okay? If medium conductivity is zero, if medium conductivity is zero, it means that is lossless. इसका मतलब है कि इस वक्त हम जिस मीडियम की बात कर रहे हैं उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी? जीरो की, क्योंकि कौन सा मीडियम हम अज्यूम कर रहे हैं? लॉसलेस. और अगर लॉसी मीडियम होगा सो ऑफ कोर्स कंडक्टिविटी जिसको मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो जीरो के बराबर नहीं होगी. अब अगर मीडिया, दोनों मीडिया जो हैं वो लॉसलेस है, आपके पास ये बाउंड्री है और इस साइड पे भी एक लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडिया है और इस साइड पे भी एक लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडिया है. मतलब है कि इनकी कंडक्टिविटी जीरो है. कंडक्टिविटी जीरो का मतलब ये है कि चार्जेस नहीं होंगे. इसका मतलब है कि आपने जो हमने जनरलाइज केस से जूम किया था, हमने कहा था कि बाउंड्री पे सरफेस चार्जेस हो सकते हैं. अब हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा? हम कहेंगे कि क्योंकि मीडियम ये भी लॉसलेस है, ये भी लॉसलेस है, तो ना इसमें चार्जेस है ना इसमें चार्जेस हैं, तो बाउंड्री पे भी चार्जेस नहीं होंगे, तो रो एस जीरो हो जाएगा. और जब रो एस जीरो है तो ऑफ कोर्स इसका मतलब क्या होगा कि जे एस भी जीरो के बराबर होगा. there are no charges, of course there will be no electric current. तो ये जो केस हम अज्यूम कर रहे हैं इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि ये सिचुएशन होगी हमारे पास कहाँ पे?
बाउंड्री। तो अब हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है इनको अगर आप देखें, जनरल बाउंड्री कंडीशन में जहां पे भी आपको रो एस नजर आ रहा है, जहां पे भी आपको जे एस नजर आ रहा है, अब ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा। जो दो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन है, ऑफ कोर्स देयर इज नो सोर्स, देयर इज नो चार्जेस, तो ये तो ऑलरेडी इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो केस है इसके लिए हम क्या कहेंगे कि हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन में क्या चेंज आ जाएगा, एन डॉट d2 minus n dot d1 will be equal to 0. Second boundary condition is same irrespective कि मीडियम किस किस्म का भी है, ये तो हमेशा 0 के बराबर होगा, डॉट प्रोडक्ट। थर्ड हमारे पास है n क्रॉस e1 माइनस n क्रॉस e2 इक्वल टू 0। और फोर्थ वन जो है वो हो जाएगा n क्रॉस h1 minus n cross h2 is also equal to 0. So generalized जो बाउंड्री कंडीशन थी हाँ दिस वन, जिसमें जिसके बारे में हम कह रहे थे कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिसकंटिन्यूअस। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज कंटिन्यूअस। सिमिलरली जनरल केस ये था कि टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस। बट अब हम क्या कहेंगे, इस केस में हम कहेंगे कि टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आपके पास कंटिन्यूअस हो गया। सो बाउंड्री के इस साइड पे जो टेंजेंट कंपोनेंट होगा वही कंपोनेंट आपको यहाँ पे भी, देयर विल बी नो चेंज इन द टेंजेंट कंपोनेंट्स। ओके, सो यू कैन सी कि जब हम कोई भी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मीडियम वन की नेचर क्या है और मीडियम टू की क्या नेचर है, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि ये रो एस और जी एस की क्या वैल्यू, और अकॉर्डिंगली बाउंड्री कंडीशन पे वर्क करेगा। सो बेस्ड ऑन दैट एक और केस भी हम ले लेते हैं, केस नंबर 2 कह देते हैं इसको। केस नंबर 2 को हम कह देते हैं कि फील्ड्स at the boundary with a perfect conductor. What does that mean is कि अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास सिचुएशन ये है कि ये मीडियम वन है, लेट्स से ये मीडियम वन जो है ये कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, इट इज एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मीडियम टू को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये परफेक्ट कंडक्टर है, तो इसका मतलब है कि इसको मैं लिख रहा हूँ एब्रिवेटेड फॉर्म में, परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इसको मैं एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखते हैं पीईसी। सो इन माइक्रोवेव इंजीनियरिंग जब भी हम यूज करते हैं ये टर्मिनोलॉजी की, ये मटेरियल पीईसी है, इट मींस के वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अब परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? वी नो के कंडक्टर का मतलब है कि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो जीरो के बराबर नहीं है। अब जितना अच्छा कंडक्टर होगा इतना उसकी कंडक्टिविटी जो है ज्यादा होती जाएगी, और जब हम परफेक्ट का वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब है कि इसकी कंडक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा हाई है। कितनी हाई है? हम इसको मैथमेटिकली कहते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी जो है ऑलमोस्ट इनफाइनाइट।
So any material having conductivity approaching to infinity को हम कहते हैं कि ये perfect electric conductor है. Now fields के point of view से इस medium का क्या behavior होगा? Medium 2 में अगर fields के हम वो करें behavior describe करें तो already पिछले उसमें आपने मुझे बता दिया था कि lossless का मतलब ये है कि conductivity जीरो होती. अब कंडक्टिविटी जीरो तो नहीं है, इसका मतलब है कि लॉसी होगा, और साथ में हम ये कह रहे हैं कि ये परफेक्ट है, इसका मतलब है कि इसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है. कंडक्टिविटी इनफाइनाइट का मतलब ये हो जाएगा कि लॉसेस इनफाइनाइट, और लॉसेस इनफाइनाइट होने का मतलब ये है कि इस मीडियम 2 में फील्ड्स जो हैं वो जीरो होंगी, क्योंकि इस मीडियम में लॉसेस इतने ज्यादा है कि फील्ड्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस किस्म की मीडियम में वो सस्टेन कर सके. इसका मतलब ये है कि मीडियम 2 क्योंकि परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इसका मतलब ये है कि इस मीडियम में E2 H2 जीरो के बराबर. So there is no fields, no electric field, no magnetic field in this medium. और क्योंकि ये कंडक्टर है, ऑफ कोर्स कंडक्टिविटी है, इसका मतलब है इसके अंदर चार्जेस हैं, और एज अ रिजल्ट चार्जेस की वजह से इसका मतलब है कि सरफेस के ऊपर भी चार्जेस हो. इसका मतलब है कि हमारे पास रो एस भी होगा, और क्योंकि ये चार्जेस मूवमेंट भी कर रहे होंगे तो हमारे पास जे एस भी होगा. सो जो हमारे पास जनरल बाउंड्री कंडीशन है, लेट मी गो बैक, ये हमारे पास जनरल बाउंड्री कंडीशन. इसमें क्या चेंज आएगा? इसमें चेंज ये आएगा कि हमारे पास जो हम ये D2 B2 और E2 ले रहे थे, सारे जीरो के बराबर हो जाएंगे. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो फील्ड्स होंगे वो कौन से रीजन में होंगे, वो सिर्फ मीडियम 1 वाले होंगे. तो अगर मैं इसको नोटेशन वाइज कहूँ तो मैं मुझे कहना चाहिए कि मीडियम 1 की अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 होगी, और मीडियम 1 के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ये होगी. मीडियम 1 के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होगी वो D1 होगी, और मीडियम 1 के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो D1. ठीक होगी. बट टू सिंप्लीफाई इट, क्योंकि हमारे पास मीडियम 2 में तो कोई फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती, सो ये जो E1 और E2 का नोटेशन तो हम इसलिए यूज कर रहे थे ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि हम मीडियम 1 की फील्ड्स की बात कर रहे हैं या मीडियम 2 की बात कर रहे हैं. लेकिन इस केस में जब आपके पास एक तरफ परफेक्ट कंडक्टर हो तो फिर वी नो कि हमारे पास जो फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम में एग्जिस्ट करती है. तो बजाय इसको हम E1 कहने के, इसको हम सिंपली E कहेंगे, इसको H कहेंगे, इसको D कहेंगे, इसको B. तो मैं इसको चार बाउंड्री कंडीशंस को लिख रहा हूँ, देन यू कैन क्लियरली वेरीफाई कि मैंने कहाँ से लिखी. मैं पहली बाउंड्री कंडीशन को लिख रहा हूँ कि n डॉट d will be equal to rho s, n डॉट b is equal to 0, n cross e is equal to 0, n cross h is equal to g. सो मैंने क्या किया कि जो जनरल बाउंड्री कंडीशंस थी इनमें जो D2 था वो तो मैंने जीरो ले लिया, तो ये फैक्टर जीरो, तो आपके पास सिंपली ये रह गया, इसमें ये रह गया, ये इसमें ये रह गया, और इसमें ये रह गया. और क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि अब हमें D1 यूज करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने इसको सिंपली इस तरह लिख दिया, n डॉट D, n डॉट B, n क्रॉस E, n क्रॉस. So whenever you are dealing with such type of situation कि आपका बाउंड्री के दूसरी साइड पे परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो, या सम टाइम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर परफेक्ट कंडक्टर तो ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, हम कहेंगे कि जितने भी हमारे पास हाईली कंडक्टिव मीडियम्स है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, अगर उसकी बाउंड्री पे हमने फील्ड्स का बिहेवियर देखना होगा तो फिर हम ये बाउंड्री कंडीशन कर सकते. सो इसमें से अगर मैं सिर्फ एक कंडीशन को जस्ट फॉर योर टू गिव यू कंसेप्चुअल आइडिया कि ये जो कंडीशन है
कि n क्रॉस e इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग शीट हो, लेट्स से दिस वन, ये आपके पास एक कंडक्टिंग शीट, n क्रॉस e का मतलब ये है कि इस कंडक्टिंग शीट के जो टेंजेंट डायरेक्शन में, अगर मैं इस तरह शो करूं, ये जो n क्रॉस e है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट कंपोनेंट होगा, ये हमेशा 0 के बराबर होगा। तो कंडक्टिंग शीट के टेंजेंट डायरेक्शन में फील्ड 0 होगा। इसका मतलब है कि फॉर कंडक्टिंग शीट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन। अगर एक वेक्टर है, उसका टेंजेंट कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट 0 हो गया, इसका मतलब यही है कि वो टोटली इसके परपेंडिकुलर ही होगा। सो दिस इज गिव्स अस अनदर आइडिया कि अगर हमने कंडक्टिंग शीट के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप मेजर करेंगे तो वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही होगी? नॉर्मल डायरेक्शन। टेंजेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हमेशा 0 के बराबर होगा। दिस इज व्हाट यू कैन से। और इस कंडीशन का क्या मतलब है? एन क्रॉस एच इक्वल, इसका मतलब ये है कि इस शीट पे जो करंट फ्लो कर रहा है, इसको आप जे कह दें, ये जे हमेशा किसके बराबर होगा? इस शीट के जो टेंजेंट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड आपको करंट दे रही होगी। एन क्रॉस एच मीन्स के एच का टेंजेंट कंपोनेंट, और ये बता रहा है कि इक्वल होगा। इसका मतलब है कि इस कंडक्टिंग शीट पे जो करंट फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के टेंजेंट कंपोनेंट के। नाउ केस नंबर 3 हम देख लेते हैं बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट सेशन, which is, this case is not very practical, but just to complete the electromagnetic theory, हमने जिस तरह एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी मैग्नेटिक करंट डेंसिटी की, एम, जिसको मैंने कहा भी था कि ये शो कर रहा है, एम जो है ये मैग्नेटिक करंट डेंसिटी है, मीन कि हमारे पास फ्लो ऑफ मैग्नेटिक करंट है। बट फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वी नो दैट इन रियल वर्ल्ड देयर इज नो सच थिंग एज मैग्नेटिक करंट, because in real world we don't have any magnetic charges. तो अगर मैग्नेटिक चार्जेस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते तो मैग्नेटिक करंट डेंसिटी डजंट मेक एनी सेंस फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बट हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था टू कंप्लीट थ्योरी। तो बेस्ड ऑन दैट हम एक कंसीडर कर सकते हैं कि फील्ड्स एट द बाउंड्री with perfect magnetic conduct, जिसको फिर हम कहते हैं पीएमसी। सो ये भी एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी मैग्नेटिक कंडक्टिविटी इनफाइनाइट। तो ऑफ कोर्स अगर चाहे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो या मैग्नेटिक कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो, उसका मतलब है कि ये आपके पास लॉसी मटेरियल है। इतना लॉसी है कि इसमें फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसमें भी फील्ड्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो बेस्ड ऑन दैट इस केस में भी हम कहेंगे कि हमारे पास मीडियम 2 और मीडियम 1, दिस इज पीएमसी, so no fields are possible in this. Okay, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? लेट